Hello learners, welcome back to my channel. So I hope समस्ते बहुत ही भलरे थिबे. So आज हम डिस्कस करिबा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट विषय. So वीडियो स्टार्ट करिबा. Heredity provides the potential and limits for development, while environment determines how much of that potential is realized. So, heredity sets the biological foundation for traits like intelligence and physical abilities, but environmental factors such as nutrition, education, and social support कौन trigger, nurture, or restrict the expression of these genetic predispositions. Their effects are not addictive and but interactive. A child's development is the product of this dynamic interplay between their inherited genes and their life experiences. So कौन कह देखो हेरिडिटी कौन प्रोवाइड करुच्ची ना द पोटेंशियल एंड लिमिट्स फॉर डेवलपमेंट जो जगह कि एनवायरनमेंट कौन डिटरमाइन करुच्ची जे केते पोटेंशियल रियलाइज होइची हेरिडिटी कौन सेट करुच्ची ना बायोलॉजिकल फाउंडेशन for traits like intelligence or physical abilities. But environmental factors कौन अच्छी न्यूट्रिशन एजुकेशन और सोशल सपोर्ट जोटा कि ट्रिगर अच्छी नर्चर अच्छी और रेस्ट्रिक्ट करुच्ची द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जेनेटिक डिस्पोजिशंस सो आर जो इफेक्ट सेटा एडिटिव नुहे बट इंटरएक्टिव सो गोटे चाइल्ड डेवलपमेंट होची इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस डायनामिक इंटरप्ले ठीक अच्छे क्या भितर ना इनहेरिटेड जीन्स और तोर लाइफ एक्सपीरियंस ओके तो हेरिडिटी रोल कौन अच्छे देखा provides potential. So genes determine the biological potential for various traits ଯେମିତି କି predisposition for high intelligence by certain physical emotional characteristics. Then asle set limits. Heredity sets a range of what is possible. कौन possible? ଯେମିତି for example it determine କରିପାରୁଛି the potential for musical ability বা physical skill. Contributes to individual difference. So hereditary factor explain କରୁଛି ଗୋଟେ significant portion of difference in personality, behavior और physical capabilities among individuals. Environment's role triggers and nurtures potential. A stimulating environment can help a child reach their full potential while a poor environment can hinder it. So गोटे stimulating environment गोटे child को help करे ताकि से तार full potential को reach कर पारिबो but a poor environment एटा possible नुहे. तापर आसला एनवायरमेंटल फैक्टर्स जमती गुड न्यूट्रिशन क्वालिटी एजुकेशन गोटे सपोर्टिव होम ये सब बहुत क्रुशियल फॉर डेवलपमेंट गोटे चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्रिएटिविटी हाउ दे रिलेट टू द वर्ल्ड ये सब अफेक्टेड थाए बाय एनवायरमेंट तापर आसला इट इज मल्टीफेसेटेड माने एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस इनक्लूड कर गोटे वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स को फ्रॉम इमिडिएट सराउंडिंग जमती कि फैमिली स्कूल टू अ ब्रोडर सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज इकोनॉमिक कंडीशंस द इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी और एनवायरमेंट देखा गोटे अच्छे नॉन एडिटिव रिलेशन देखो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी और एनवायरमेंट इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ multiplicative relation, not a simple additive one. Dynamic and complex. The interaction is dynamic, meaning that the environment can influence the expression of genes and genes can also influence the environments an individual seeks out or creates for themselves. Case by case basis, the relative importance of heredity versus environment can vary from different traits and for different individuals. It is a subject of ongoing study and debate. MCQ देखिबा व्हाट इज हेरिडिटी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा आपन को क्वेश्चन आसे बहुत थोड़ा आसे देखंतु मन रखिबे द पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग द पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट कोटा देखो आई कलर आई कलर आप नोटिस करेंगे बाबांकर जदि आई कलर ब्राउन अच्छी तो छुआर भी ब्राउन आसपार बट लैंग्वेज स्पोकेन फेवरेट फूड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एगुला थोड़ी ना हेरिडिटी एटा नुहे व्हाट इज द रोल ऑफ जेनेटिक्स कौन अच्छी देखो जेनेटिक इन्फ्लुएंस ट्रेट्स आउ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेरिडिटरी डिसऑर्डर कोटा देखो ना सिकल सेल एनीमिया ठीक अच्छे व्हाट इज द टर्म फॉर द जेनेटिक मेकअप
कौन जेनोटाइप ठीक अच्छे जेनेटिक देखिए तो रिलेट कर सो जेनोटाइप What is environment? Environment कौन very important question the external surroundings that influence development. Which of the following is an example of an environmental factor? कोटा देखो nutrition okay बाकी सब होची तमरो हेरिडिटी जाउची. What is the role of environment in development? कौन रोल अच्छी ना environment influences traits और characteristics. इटा मन रखिए trait और characteristics. Which of the following is the environmental influence? कोटा देखो parenting style right, genetic makeup style right, and socio-economic status be right. What is the term for the interaction between heredity and environment? कौन term? Very important. Nature versus nurture. Nature versus nurture. तापर आसला what is the relationship between heredity and environment? कौन relationship अच्छी देखो they interact to influence development. Which of the following is an example of gene environment correlation? कोटा ना interaction between genetic और environmental factors. What is epigenetics? कौन epigenetics कौन ना the study of genetic changes influenced by environment. Which of the following is an example of environmental influence on gene expression? Epigenetic changes. What is the impact of heredity environment interaction on development? Now it influences traits and characteristics. Which of the following is a critical period in development? Quota critical period infancy. What is the role of early environment in development? कौन role अच्छे देखो ना it influences later development. Which of the following is an example of a risk factor in development? कोटा देखो risk factor good nutrition supporting parenting poverty genetic predisposition कोटा गोटे risk factor development रे good आपन को nutrition दिया गला भलो nutrition दिया गला तो आपन development हबो ना नहीं तो एटा गोटे risk factor नुहे सपोर्टिव पेरेंटिंग आपन को मिलुची तो एटा भी रिस्क फैक्टर नुहे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मिलुची एटा भी नुहे तो पोवर्टी गोटे रिस्क फैक्टर. What is the impact of socio-economic status on development? देखो कौन impact कौन अच्छी देखो it has no impact wrong. It influences access to resource correct. बट यह कौन इंटेलिजेंस बा पर्सनालिटी को डिटरमाइन कर परिबो नहीं सो आंसर हम कौन इट इन्फ्लुएंसेस एक्सेस टू